Hello everyone, welcome to our YouTube channel CHSE Science Classes. So आज physics lecture रे हम discussion करिवा किछि important concepts like different type of materials like conductor, semiconductor, insulator, oh, and ଗୋଟେ short questions भी पढ़िवा about dipole. But ଗୋଟେ revision करदवा last class रे हम already discussion करथिले something about this electric potential due to a dipole. जोटी आम फाइनाल डिराइव करते माने फॉर डाइपोल व्हिच इज एट ए पर्टिकुलर एंगल विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड थीटा पोटेंशियल केते आछि आम फाइंड आउट करते ओके इक्विपोटेंशियल सरफेस ओके सो ये जो नामटा अच्छी इक्विपोटेंशियल सो आपको जो आम डिजोल्व करवा सो आई कैन टेक इट इनटू टू पार्ट्स सो फर्स्ट वन इज इक्वी मीन्स इक्वल पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल माने इक्वल पोटेंशियल माने जो सरफेस रे पोटेंशियल इक्वल थिवो ताको हम कोइ परबे इक्विपोटेंशियल सरफेस बट तार कोन एनालॉजी रहउची सो लेट्स चेक करिया सो ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ द फील्ड अराउंड इट सो ऑलरेडी हमें पढ़िचे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सो ईच चार्ज इज सराउंडेड बाय सम फील्ड अराउंड इट सो ऑलरेडी मु प्रीवियस लेक्चर रे डिस्कशन करथली अबाउट फील्ड कांसेप्ट ऑफ फील्ड and correlate करथली with magnet and magnetic field सहित correlate करथली in lecture 2 or something so जदि के देखि नांती सो जाई के देखंतु ओके so suppose this one is our electric charge and all charge is associated with some field माने ई चार्ज रो कोन थिबो त चारि पटे field थाय किछि so suppose this one is the field of this charge okay so definition कोन होछि so if we draw its surface in such a way that electric potential at all the points on the surface is same then we call it as equipotential surface माने suppose ये जो surface हला ये surface रे suppose all the points on this surface have same potential माने ये point रे potential measure करली suppose ये point रे potential measure करली so all the points रे जो potential measure करली and सब point रे potential जो same आसिला then we can call the surface as equipotential surface okay so मैं आउट equipotential surface draw करछि suppose something like this so जो yellow circle जो देखा जाउछि so this can also be a equipotential surface and this green line so this green area this can also be an equipotential surface माने equipotential means equal potential माने ये जो circular body जो देखा वाला so our surface रे on all the points the potential electric potential is same at all the points okay so for a point charge the electric field will be in radial and direction मान जो गोटे point charge नबा so electric field direction towards outside रहेबो in radial direction and equipotential surface are concentric spheres with center at the charge तो ए चार्ज को हमें सेंटर धरि की हमें स्फीयर ड्रा करबा with different radius and all the spheres will be equipotential surface because all the points on the surface will be at equal distance from the center मान जो गोटे स्फीयर ड्रा करियो स्फीयर रो जा सेंटर रहला ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल डिस्टेंस रे रहबे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ओके एंड ओके सो सपोज एवडा छ इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन and electric field will be perpendicular to the equipotential surface so at all the points suppose a point remove consider koli so the electric field will be exactly perpendicular to the surface okay so these are the characteristics of equipotential surface so exam re 2 marks question astha bele what is equipotential surface so equipotential name indicate korchi equal potential and jo surface re all the points have having same electrical potential so that is called as equipotential surface okay so this question I already previous classes रे पढ़ देछे torque on an electric dipole placed in an electric field already discussion कर देछे हम खाली छोटो glimpse दे दोजी so हम कोन करथिले गोटे electric dipole रे नेथिले inside an electric field with an direction this one angle is theta okay so then एडी दीटा फोर्स एक्ट करबो जेतु गोटे चार्ज नेगेटिव गोटे चार्ज पॉजिटिव so दीटा फोर्स आस्थिले f1 f2 and f1 f2 value हमें कैलकुलेट करथिले and final torque कैलकुलेट करथिले so जार value आस्थिला tau equal to p vector cross e vector so p vector मान कोन dipole moment and e vector is the electric field so in term of sin theta so p is sin theta so where theta is the angle between this axis of the dipole and electric field direction so it हमें already derive कर देछे
तो देखी ना सो प्रीवियस लेक्चर रे देखंतु ऑलरेडी डिस्कशन ऑलरेडी जिनस गुड़ा आम डिस्कसन कर देछे। सो ये आम स्टार्ट करवा आज गोटे नुआ कॉन्सेप्ट लाइक आम कौन स्टडी करथिले टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जदि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड रे रहुची सो किसी टॉर्क एक्टिंग करछि सो किसी पोटेंशियल भी रहिबो ऑब्वियसली। सो से पोटेंशियल रो वैल्यू केते रहउची आम डिस्कशन करबा एबे नेक्स्ट स्लाइड्स रे। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जदि गोटे डाइपोल को आम प्लेस करबा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इट वी आर गेटिंग ड्यू टू दिस डाइपोल आम कैलकुलेशन करबा। ओके सो वी ऑलरेडी भी डिस्कस ऑल द डेरिवेशन आम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स रे कर देइथिले। सो जाकि देखंदु सो हम फाइनल एक्सप्रेशन कोन पाइथिले टाउ वेक्टर इक्वल टू सो एटा होची सिंबल टाउ वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। सो p इज द डाइपोल मोमेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ e वेक्टर इज दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो लेट्स रोटेट द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा एंड द वर्क डन बाय द टॉर्क विल बी। सो सपोज हम कोन करबा डाइपोल को टिके रोटेट करबा सो रोटेशन बाय एन एंगल थीटा। सो आम ऑलरेडी जानचे वर्क डन माने कौन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो जदि किसी डिस्प्लेसमेंट हो सो किसी वर्क डन हुए सो ये भी आम डाइपोल को केते एंगल डिस्प्लेसमेंट करछे थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट करछे तो वर्क डन केते आसीबो। सो वर्क डन एक्सप्रेशन विल बी dw इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। ओके सो स्मॉल चेंज इन वर्क डन dw इक्वल टू टाउ होची कोन टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल d थीटा। ओके फाइन सो टाउ वैल्यू केते p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर तो ताकू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देले। सो वी विल गेट p sin थीटा सो d थीटा को d थीटा रहला बट वी आर गेटिंग ए नेगेटिव साइन हियर। व्हाई वी आर गेटिंग दिस नेगेटिव साइन हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रोटेशन इज अगेंस्ट द टॉर्क। सो टॉर्क रो डायरेक्शन जुआड रहउची तार अपोजिट डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट टा करछे। सो सेहित पई हमर वर्क डन रे नेगेटिव साइन टा आछे। ओके सो टावर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कले p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर सो दैट इज p sin थीटा एंड d थीटा को d थीटा रहला। व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज कमिंग हियर बिकॉज द रोटेशन इज अगेंस्ट द टॉर्क। सो टॉर्क रो डायरेक्शन जहाँ रहउची आम रोटेशन जो एंगल थीटा डिग्री रोटेशन करछे तार एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन ने करछे। सो जेहेतु डायरेक्शन चेंज होची सो दैट्स व्हाई ए नेगेटिव पार्ट कम्स हियर। ओके नेक्स्ट so now let's find out the change in electrical potential energy. Okay so I already define कर देचे electrical potential will be the negative of work done. So work done जहाँ भी आइसो तार जो negative नहीं जीवा so that will be our which one electrical potential energy. Okay means du will be equal to minus dw which is equal to p sin theta t theta because dw value हमें already previous slides रे हमें find out कले कहते minus p sin theta d theta so 2 minus become plus so d equal to p sin theta d theta. Okay so if theta is the angle change from 90 degree to theta so theta maximum value केते पारिबो 90 degree हे पारिबो एना 90 परे हमर फेज शिफ्ट हे जाउची। सो चेंज इन पोटेंशियल टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी केमि बाहरिबो सो du मींस चेंज इन ए स्मॉल सपोज d theta एंगल रोटेशन कलरु हमर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आसला du फॉर टोटल फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री जो दरकार कौन करिया हमें इंटीग्रेट कर दवा फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री। सो इंटीग्रेशन ऑफ du फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा p sin थीटा d थीटा माने टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पाई हमें ए एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दवा फ्रॉम 0 डिग्री फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री। ओके सो हम सॉल्व कर दवा so upper limit minus lower limit so du ro integration u of theta minus u of 90 degree is equal to integration of p is constant dipole moment electric field जेहेतु हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं छे सो e भी कांस्टेंट हो गला सो आपको मैं इंटीग्रेशन बाहर कर देली p and sin theta d theta integration is minus cos theta and the limit is from theta to 90 degree. So left side same रहला so minus p cos theta minus cos 90 is 0 so we will get p cos theta and p cos theta को हम लिख परियो minus p vector dot e vector dot product. Okay next so if we choose potential energy of the dipole as 0 for 90 degree means जदि dipole axis and electric field जदि perpendicular हे गला so theta केते 90 degree हे जो माने जो u90 डिग्री component we can make it at 0
So final expression will get u theta equal to minus p vector dot e vector. Okay, so this is our final expression. Okay, so we started with this previous slides like this. So tau equal to p vector plus e vector. So now we make a small displacement, suppose theta. So suppose this one is d theta, then work done will be dw equal to tau d theta, and we have integrated our all the surface from theta to 90 degree. So we got the final expression like u theta equal to minus p vector dot e vector. Okay, so it's very important question. Next. Okay, so this one is important concept for all the intermediate students. Classification of material based on interatomic bonding and spacing. Okay, so already chemistry classes रे already पढ़ी first year I think. Still गोटे glimpse दे दूँगी. So we can classify material into three categories. So first one is called solids, second one is liquid, and third one is gas. माने गोटे होची solid, liquid and gas. माने जोटा ओडिया रे पढ़ी कठिन, तरल and गैसीय अवस्था. ओके, सो कौन आम डायग्राम रू भी आम इंडिकेट कर इंटर आटमिक डिस्टेंस और बॉन्डिंग माने कौन. सो दीटा आटम भितर जो स्पेसिंगटा केते रोची, सो सेटा कहबो इंटर आटमिक स्पेसिंग और बॉन्डिंग आम कहि परियो. ओके, सो बॉन्डिंग एंड स्पेसिंग आर मीन्स वी कैन कोरिलेट. जदि स्पेसिंग अधिक रहिबो बॉन्डिंग कमी जिवो, बॉन्डिंग जदि टाइट रहिबो तो स्पेसिंग कमी जिवो. सो इन द केस ऑफ सॉलिड्स, सो सॉलिड्स रे कौन, सो परफेक्ट अलाइनमेंट आसीबो. माने दीटा मटेरियल दीटा आटम भितर डिस्टेंस बहुत कम आसो. दैट्स वाई सॉलिड्स आर वेरी इनकम्प्रेसिबल. माने सॉलिड को आम कंप्रेस कर परिबा नाही. सो वेयर इन केस ऑफ लिक्विड द इंटर आटमिक डिस्टेंस इज लिटिल बिट लार्ज एज कंपेयर टू द सॉलिड्स. माने सॉलिड्स परफेक्टली अरेंज होगी अच्छा, किंतु लिक्विड रे आम इंटर आटमिक डिस्टेंस टिके बढ़ी जीवो. सो बॉन्डिंग टिके कमी जीवो. बट इन द केस ऑफ गैसेस, सो देयर इज ए ह्यूज आटमिक स्पेसिंग. माने दीटा आटम भितर स्पेसिंग बहुत अधिक थी. सो दैट्स वाई गैस कैन बी कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेसिंग इन बिटवीन टू आटम्स. सो आम या लिक्विफाई कर यूजिंग हाई प्रेशर. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड अपॉन देयर बॉन्डिंग एंड स्पेसिंग. ओके, सो मेनली आम सॉलिड्स को फोकस करवा ये चैप्टर रे बिकॉज लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, सो दैट इज केमिस्ट्री रिलेटेड. सो मेनली आम डिस्कशन करवा अबाउट सॉलिड्स. ओके, so we can classify solids based upon their electrical properties into three main types. Okay, so solids भी आमे सेमानकर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करवा. सो जेहेतु आम ऑलरेडी कौन पढ़ुचे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करुचे. तो सेमिति जदि आम डिफरेंट मटेरियल्स नवा, डिफरेंट सॉलिड्स, मेनली सॉलिड्स, तो सेमानकर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करवा. So I can classify, or we can classify the materials into three broad categories. Okay, so main three अच्छी, तो तीन रू अधिक भी अच्छी, but mainly आम focus करें about three. So what are this? Suppose I am showing some examples. So किसी example आम देखिए आम analysis करवा. Suppose this one कौन है? Copper, and this one is our silver, and this one is aluminum wire, and this one is gold. Okay, so all materials are different. सो कॉपर प्रॉपर्टी अलगा, सिल्वर प्रॉपर्टी अलगा, एल्युमिनियम भी प्रॉपर्टी अलगा, एंड गोल्ड प्रॉपर्टी अलगा. सो समस्त आटमिक नंबर अलगा, समस्त आटमिक मास अलगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एवरीथिंग आर डिफरेंट. ओके, बट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, माने एमान के भीतर गोटे कोरिलेशन अच्छी और सेमान के भीतर किसी सिमिलारिटी अच्छी. कौन सिमिलारिटी? ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माने कॉपर, सो कॉपर वायर आम घरे यूज करछु. सो दिस इज ए वेरी गुड कंडक्टर. Silver, it is also a very good conductor of electricity. Aluminum wire भी यूज करा होची हमर, and gold is also a very good conductor. Okay, so in this type of materials, outer electrons are loosely bound and or almost free to move. So suppose copper है गला, copper atomic number 29, aluminum 13. Okay, so मानकर outer most cell रे electron configuration में जानचे. So like 1s2, 2s2, 2p6 already मैं फर्स्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले अबाउट दैट वन. सो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन रोची, सो ए जो मटेरियल गुडा जोड़ा कंडक्टर और मेटल जो कहते एमानकर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. माने जो आम किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दबा और ड्यू टू लैटिस एक्साइटेशन और एनी प्रॉपर्टी और सपोज हीटिंग और थर्मल एनर्जी जहाँ भी दे देले, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप दिस
from the nucleus and they can treat as free electrons माने here and there motion करि पारबे. So these, that's why they are called as free electron or conduction electron. So मानकर outermost cell जो electrons they are loosely bound. So that's why we can remove these electrons by using any sort of any atomic excitation by light भी पारे or energy or heat किसी भी हम देखि ताकू बाहर कर परिबा. So समान को जे कोन free electron. These type of material are called conductors. Okay, so this is our first category, that is called conductor. So conductor माने कोन, so which contains a large number of free electron or conduction electron. Okay, so these are the example of conductors. So mainly metals are good examples of conductors. Suppose हम iron नहीं परिबा or zinc नहीं परिबा. Okay, so mainly metals are very good conductors and most of the metals are in the solid form. But mercury नहीं परिबा, mercury exists in the liquid form but that is also a metal. Okay, so next category होची कोन देखिबा, एडा होची कोन, suppose glass. Okay, so it's look like glass, normal glass हम जोटा windows रे हम यूज करछे, windows or your any glass surface. And this is some example of plastic. Okay, so this plastic bottle, this plastic caps and this plastic spoon and plastic container, whatever, all are made of plastic. And this is wood. Okay, katha. And this one is example of this is a diamond. Okay, so ये जो चारटा material, so they are although they are of different category. Okay, glass, plastic, wood and diamond. So इमान को भितरे भी किसी correlation अच्छी, माने they have some similar type of property. So कौन, so in this type of material माने जो material उड़ा रहे outer electrons are tightly bound. माने इमान को outer electron ने कौन, outermost cell electrons are bound to the nucleus. माने even up to हमें किसी energy दवा, so it is very difficult to remove this outermost cell electron. माने हम किसी energy देले भी outermost electron बाहर को जाई परिबे नाही. So there are no free electron. So ये जो material गुड़ा है, जो plastic, glass, wood, diamond, mica sheet, a lot of examples are there. So एमानकर कौन हुए, there are no free electrons. So even if we keep this in any electrical field, the electrons can't leave the parent atom. माने एमान को जो हमें किसी electric field रखिबा, किसी external stimuli दबा, so these electrons cannot come out of this parent atoms. So that's why these are called insulators. Okay, so these are called insulators. So this is our second category. Okay, so first category पढ़ले कौन हमरो conductor. So conductor कौन main, so main conductor insulator define करा होची mainly based upon this free electron. So conductor रे outermost cell electrons are loosely bound, so they can come out of this orbits and they can treat as this free electron. So that's why these are called conductors. And for insulators there are no free electrons, but even if we apply high voltage the response will be very less. मान जदि हमें हाई वोल्टेज दबा और किसी एक्सटर्नल एनर्जी दबा लाइक हीट और लाइट और एनीथिंग, it is very difficult that an electron will leave the outermost cell. So there are very few, or we can say that there are no free electrons, मान किसी free electron नहीं. So that's why these are called as insulators. Okay, so third category, so that one is interesting one. So this is the example of silicon wafers, and this is the example of germanium, and these are some other examples like gallium arsenide, gallium phosphide, silicon carbide, boron nitride, aluminum nitride. So these are the example of some other materials. So emanकर speciality कौन, so these materials behaves like insulator at absolute zero. Okay, so ये material गुड़ा माने dual property they act like dual properties. माने कौन at zero के means at absolute zero सेमानकर property होगा, but आम जो टेम्परेचर बढ़े कि रूम टेम्परेचर आसवा सेमानकर प्रॉपर्टी अलग. सो दे स्लाइटली कंडक्ट. सो एट एब्सोल्यूट जीरो माने जीरो के, सो दे बिहेव लाइक इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर दे एक्ट लाइक कंडक्टर्स. सो दैट्स वाई द नेम सेमी कंडक्टर. Okay, so semiconductor, semi means what, partial. So they conduct partially where at room temperature or at higher temperature, but at absolute zero they behaves like insulator. माने एब्सोल्यूट जीरो रे इंसुलेटर बड़ा बिहेव करती एंड एट रूम टेम्परेचर रे से माने कंडक्ट करती स्लाइटली. सो दीज आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर. ओके, सो सेमीकंडक्टर आम स्पेशल चैप्टर अच्छी. सो डिटेल अबाउट दिस सेमीकंडक्टर, आवर पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ओके,
एंड डोपिंग पी टाइप एन टाइप सब डिटेल अच्छे आम सेमीकंडक्टर चैप्टर आम डिटेल पढ़ा नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर्स गुड़ा पढ़ा बट सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मटेरियल among this insulator and conductor. Okay, so semi means partial, means at insulators are at a particular criteria they are behaving as insulator at 0 K, but when we increase the temperature and we reach a room temperature means 300 K, they slightly conduct manकर conductivity बढ़ जाउछि. So these are called as semiconductors. Okay, so next an important concept. So field inside a conductor. So suppose गोटे आम कंडक्टर नवा एंड ताकू आम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट कंडक्टर. तो कौन होची ताकू आम डिटेल स्टडी करबा. ओके ओके, सो लेट्स टेक ए कंडक्टिंग प्लेट. ओके, सो कंडक्टिंग प्लेट नवा व्हिच इज मेड अप ऑफ ए कंडक्टर. सपोज आयरन or copper sheet आम नहीं परिबा. So which one conduct electricity, we can take that one. So initially there is no electric field and in a small volume there are equal number of electron and proton inside the nucleus and the total charge is 0. But I कहली charge conservation first class माने all charges, all every material is neutral in nature. माने the number of electron revolving around the nucleus is equal to the number of proton inside the nucleus. ओके, माने न्यूक्लियस बाहर ऑर्बिट रे जेतरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करथांती सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन थांती न्यूक्लियस भीतर. सो गोटे जदि आम न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट नवा तो जेतरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थांती सेतरा नंबर ऑफ प्रोटॉन थांती. सो टोटल चार्ज इक्वल टू 0. ओके, सो सपोज दिस वन इज अवर conducting plate. So conducting means it can be of any conducting material like copper or aluminum or zinc or platinum or whatever we can take. So the material doesn't matter. Okay, and suppose these are the electrons. Okay, so electrons, as I already told you that metals or conductors have a large number of free electrons. When their outermost shell guda loosely bound होता है, they can come out of the bonding and they can treat as free electrons. ସେମାନେ free electron गुड़ा behave करती. तो से free electron गुड़ा जो behave करती, suppose these are the free electrons. Suppose okay, so I am not indicating these protons. So protons से nucleus भीतर से those are very immobile. So ताको हमें बेसे disturb करी परिवा नहीं. So I am not in, I am only taking these electrons. Okay, now what I will do, so these are the electrons. These red dots all are free electrons. Suppose now okay, so what I will do, so let's apply an electric field from left to right direction. तो आपको मैं कौन करिए बोले left to right direction. Left to right means like this direction. I will apply an electric field. Okay, so suppose in that direction I will apply an electric field like this. Okay, so this is this green color dotted line. So this is the electric field. Okay, so जदि हमें so electric field रोजी and भितरे जो electron उड़ा रोचन, so electrons will be experiencing some force due to this external electric field. So जेहेतु हमें किसी electric field apply करिचे, so obviously this electrons, there will be something to this electron. So electron ऊपर किसी force पड़े, तो कौन होची देखिए, so कौन होगा, so this electron they will be shifted towards the opposite direction. Okay, so कौन हुए, so due to this external electric field and this charge is negatively charged. Okay, and the electric field direction is from left to right, so the electron will be shifted towards right to left. Okay, so electron charge कौन negative charge. So जेहेतु आमर सब इलेक्ट्रॉन गुड़ा गोटे साइड को पड़ी आसिले, आगुर कौन थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होइकि थिले. नाउ ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड all the electrons are coming to one side. So due to this what will happen, so the left side of this plate it will become negatively charged. कहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन नेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन गुड़ा गोटे साइड को पड़ी आछंती. सो ये जो लेफ्ट साइड रे कौन होबो, सो दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज लाइक दिस एंड द अपोजिट चार्ज विल बी पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज जेहेतु टोटल चार्ज इज न्यूट्रल जीरो. समान मध्य जदि इलेक्ट्रॉन गुड़ा गोटे साइड को पड़ी आसले, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव, so that part will become negatively charged and the opposite part will become positively charged. Okay, okay, so external electric field, so direction कौन थिला towards right side. so जेहेतु हमर इलेक्ट्रॉन गुड़ा शिफ्ट हो जाउछंती from left side,
So due to this electron redistribution, so we are getting left negative charge here and a positive charge here. So due to this electron redistribution, we are getting an internal electric field. So जेहेतु इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन हो शिफ्ट हो जाती, सो जेहेतु शिफ्ट होती नेगेटिव चार्ज गुड़ा लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज गुड़ा राइट साइड. सो पॉजिटिव नेगेटिव से गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन विल बी इन दैट डायरेक्शन. ओके, सो आम अप्लाई करते फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूशन, so we are getting an internal electric field from right to left direction. Okay, so that's why E vector direction is from left to right. So this E vector is applied electric field माने external जोड़ा हमें provide करचे, किंतु से electric field that will affect this electrons. Okay, sorry. Okay, so this due to this electric field it will experience some force on this electron. So से इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन है शिफ्ट हो गोटे साइड को. सो ये चार्ज से साइड कौन हो नेगेटिवली चार्ज एंड अपोजिट साइड पॉजिटिवली चार्ज. सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव सेपरेशन, सो वी आर गेटिंग एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट. So with time E prime becomes stronger and stronger with few milliseconds steady state will be achieved. So what particular time रे कौन हो तो large number of electron will go to the left side. So the strength of this internal electric field will increase. Okay, so जदि बढ़िला so what particular time आसियो that what external field and internal field they will become equal. Okay, so गोटे थोड़ा equal state और steady state जो पड़े आसियो आउ इलेक्ट्रॉन मोर डिस्ट्रीब्यूशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन हम ना एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टडी स्टेट. ओके, एंड इट विल बी अचीव इन फ्यू मिलीसेकेंड्स ओनली. ओके, हाउएवर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एपियर ऑन द सरफेस. सो किसी सरफेस रे सो जो सरफेस आसला सो ये सरफेस रे किसी नेगेटिव चार्ज आसीबो एंड ए राइट साइड सरफेस रे किसी पॉजिटिव चार्ज आसीबो, बट इनसाइड दिस कंडक्टर सो देयर वोंट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, why? Because the external electric field direction is from left to right and the internal electric field is from right to left, so both cancel with each other. So due to this charge redistribution, there are some charges, there are some electron or some negative charges on one surface and some positive charge on right surface. Okay, so left charge रे left side रे किसी electron हमर deposit or accumulate or redistribution हम and on the opposite side positive charge जोड़ा हमारे जमा. So due to this, so there will be some negative and positive charge on the surface. So surface रे किसी आसीबो, but inside this conductor there won't be any electric field. Okay, so let's summarize all these things. So if we keep a conductor in a uniform electric field, so free electron will redistribute themselves because this electric field will apply some force on the electron. So जेहेतु हमारा electron is electrically charged or negatively charged and we are keeping that electron inside an electric field. So जेहेतु हमें किसी field apply करूचे, so the electron will redistribute among themselves. So it will go towards the left side and an internal electric field will be developed because of this redistribution. So positive charge right side पड़ी आसले, negative charge left side पड़ी आसले. So due to this positive charge negative charge separation, we are getting an internal field. And internal field and external field will cancel each other कहीं जिनका direction opposite रोची, so they will cancel each other. So जो cancel हो ताकू आज steady state. So once steady state or equilibrium state जो पड़े आसला आउ electron redistribution हबो नहीं and so there no electric field exists inside a conductor. So inside a conductor, so conductor surface रे positive and negative charge आसी पारे, but inside this conductor there won't be any electrical field. Okay, and the redistribution takes only milliseconds. Milli means 10⁻³ seconds. So suppose I'm going to metal sheet को नहीं जीवा within a fraction of seconds, 10⁻³ seconds, and the redistribution will take place and there won't be any field inside the conductor. Okay, so this is all about today's lecture. So आज lecture में discussion करें about equipotential surface. Equipotential surface माने कौन? So any surface at all the points the potential will be same. Then we discuss the potential due to a dipole in a uniform electric field. So derive करें हमें तार final expression.
Next we have studied about 3 different type of materials like conductor, insulator and semiconductor with different examples. सेमानकर property कौन change होची. Next आमे पढ़ले field inside a conductor, internal field, external field. जो गुड़ा में metallic plate को electric field रखिबा तो कौन property change होची. Okay, so that is for today's lecture. So thank you for watching this video. So आपनकर किछि भी comments or suggestions or doubt अच्छी so please comment section में मुझे जनातु. So within आम 24 hour reply करूँ and प्लीज सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को. सो प्रति वीक रे हमर नवा नवा वीडियोस गुड़ा अपलोड करछु आम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स नॉट ओनली फिजिक्स. सो हमर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आईटी सब सब्जेक्ट हम वीडियो अपलोड करछु. तो प्लीज देखंतु से वीडियो गुड़ा शेयर करंतु विथ योर फ्रेंड्स सो दैट से बेनिफिट पाई परिबे. एंड हमर फेसबुक पेज टे अछि जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देछि. सो फेसबुक पेज रे अपन जॉइन होंतु. CHSE साइंस क्लासेस ना रे अछि. सो प्रति जहाँ भी नुआ वीडियो आसो आम से लिंक आम अपडेट दूँ. सो दैट आप पूरा अपडेट हो पारे पाठ सहित. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.